Hey guys, welcome back to LYT MODE channel, and today in this video we are going to discuss something very important financial term which is related to the previous asked question RBI grade B 2017, 18 and 19. Okay, and one more thing I will tell you that if you like this video you can share it with your friends who is preparing for the exams, and hit the like button and hit the bell button to subscribe our channel and get the daily updates regarding the RBI and SEBI and other exams. Okay, and for complete course you can visit us at lightmode.in. So we will start the financial terms, and first we will discuss which were the question asked in the previous exams. So the first question is derivatives derive value from. Okay, so the question is asking that derivatives किस चीज से अपनी value derive करता है. तो ये question आपको पूछा गया था. This question was asked in the RBI grade B phase 2 2019 for 1 marks. And the second question is which risk can be eliminated by the derivatives. Okay, so there are many risks which can be eliminated by the derivatives, and this question was also asked in RBI grade B phase 2 2019 for 1 marks. So you can see that derivatives is a very important topic for the RBI grade B exams, and I have already discussed this topic in the previous video and in our course video. But अगर आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं तो आज हम रिवाइज करेंगे, और उन लर्नर्स के लिए स्पेशली जिन्हें ये टॉपिक्स में थोड़े डाउट्स हैं और उनको ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, तो आज हम दोबारा से उस चीजों को एक बार फिर से पढ़ेंगे और आई विल ट्राई कि आपको सिंपल वे में ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए. ओके, तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डेरिवेटिव्स. बहुत ही ध्यान से और फोकस सुनिए ताकि आपको चीजें समझ आए कि डेरिवेटिव्स क्या होता है. इट इज वेरी सिंपल बट इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. सो we will solve this topic today. Okay, so what are the derivatives? So basically derivative एक contract है जो allow करता है business को, investors को और municipalities को to transfer the risk. Okay, so by the derivative contracts these people can transfer the risk. So when you are holding a derivative contract you can reduce the risk of bad harvest, bad weather and the adverse market fluctuation or any other negative impact of an economy. Okay, so derivative will help you to reduce that risk. So it derive value from the underlying assets, and this agreement is to buy or sell that underlying asset. Okay, so what can be these underlying assets? This can be a stock, bond, commodity, interest rate or currency exchange rate. So derivatives basically derive their value based on the price, volatility, that is movement of price, and riskiness of an underlying stock, bond, commodity, interest rate or currency exchange rate. Okay, so this agreement is basically to buy or sell the underlying asset. So I hope that you get the answer of the first question, that derivatives derive value from the underlying asset. Okay, it is very clear, it is very simple that derivative is a contract to derive the value from the underlying asset which we use, which a person or which a marketer or which are investors, businessman use to reduce that risk. Okay, there are three types of traders in the derivatives market. First one is hedgers, speculators and arbitrageurs. तो ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, लेकिन आज मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि hedgers कौन होते हैं. तो hedgers are basically an investors who is an underlying asset owner and who is looking to transfer that risk. तो जो उस underlying asset का owner है और transfer को risk को transfer करने की कोशिश कर रहा है, that are hedgers. Okay, and next is speculators. So they are basically the risk takers whose main purpose is to make the profit on the basis of prediction of price. तो hedgers जिस person की तलाश कर रहा है to transfer the risk, वो है speculators. Okay, और speculators वो है जो market के price को predict करता है और profit के purpose से उन चीजों को derivative contracts के अंदर खरीदता है. Okay, और arbitrageurs is very simple person, a person who buy
a product or a commodity at a low price from a place and sell it to a high price at a different place. मतलब आर्बिट्रेजर्स कौन है? जो एक जगह से 10 रुपए का सामान लेता है और दूसरे जगह पे उसे 15 रुपए में बेचकर 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो आर्बिट्रेजर्स है. ओके, दिस इज क्लियर that these are the traders in the derivative market. Next is most common derivative contracts that are over the counter or exchange traded. So over the counter is basically a contract directly between the two parties. It can be negotiated privately. It is not legal. It is not standardized. So this is the over the counter where two persons are directly connected to make that derivative contracts. And but in the case of traded, these contracts are traded via a specialized derivative exchange or other exchange. So where a exchange counter is in the contract, that is a exchange traded contract, and this is a legal and a standardized contract. Okay, so this is clear: over the counter and exchange trader. And there are mainly four sorts of derivative contracts like forwards, futures, swaps, and options. So we will talk about it, but first I would like to tell you about some different risks. So what are the different type of risk which derivatives manage, and how the derivative manage different type of risk, which we will know a little about it. Okay, so what are the different risks? That are commodity risk, stock market risk, and the interest rate risk, and the fourth one is credit risk. So I will tell you about the commodity risk first. Okay, so what are the commodity risk? When a business that must buy a commodity in the future is exposed to the risk of a rapid increase in the price of that commodity. It means that कि बिजनेस जो एक फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में कमोडिटी को खरीदने वाला है और उसे इस बात का रिस्क है कि उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो रैपिडली इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज भी कर सकता है, तो दैट इज अ कमोडिटी रिस्क. Okay, so here we will understand the future contract also. So a future contract is a common derivative which can be used to the risk of the commodity. Okay, how we will understand with that an example that तब एक future contract आपके risk को reduce करता है. That when just suppose that when you buy a commodity future contract, you agreed today. ओके, दैट आप एक कमोडिटी खरीदने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि आपने आज अग्री किया है टू द प्राइस, आपने उस प्राइस पे आज अग्री किया है, दैट यू विल पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट कमोडिटी इन द फ्यूचर. ओके, सो जब आप एक कमोडिटी के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे होते, आज उसकी प्राइस को तय करते कि हम आने वाले इस समय में इस प्राइस पे उस कमोडिटी को खरीदने वाले हैं, तो दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. Okay, so the seller of that contract is obligated to deliver the commodity on a specified date in the future for that price. तो जो सेलर है उस कमोडिटी का, उसे उसी प्राइस पे आपको वो कमोडिटी देनी पड़ेगी इन द फ्यूचर. Forwards and futures में बहुत similar difference है, that forwards are traded over the counter and futures are traded on the exchange, and you already know that what are the over the counter and what are the exchange traded. Okay, so let's understand this commodity risk with an example also. That अगर एक farmer rice grow कर रहा है, if a farmer is growing rice and he sell the future to a buyer, ओके, वो उस राइस का फ्यूचर एक बायर को सेल कर देता है ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दैट एट द फिक्स टाइम फार्मर विल सेल दैट प्राइस फॉर ₹50 kg टू हिम. Okay, here he fixed the rate for that commodity. Okay, that no matter what situation is going to come in the sense of weather condition or the economic condition, his commodity price is fixed to that ₹50 per kg for that rice. Okay, but suppose that if price goes up to ₹60 per kg, here he squeezes the profit, but without any fear he can focus on growing the rice. And if price goes down to 40 kg, then also he is going to enjoy that profit. So he fixed the price for ₹50 per kg in the derivative contract. मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कमोडिटी रिस्क को कैसे कम किया जाता है. लाइक अ फार्मर
जो कि राइस की खेती कर रहा है उसने उसका प्राइस फिक्स कर दिया है 50 रुपी पर केजी अंडर अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर कंडीशन कैसा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, उसे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसी 50 रुपी पर केजी पे उसको वो राइस जो है वो बायर को सेल करनी है। उसका प्राइस 60 रुपी होगा या 40 रुपी होगा, इट डजेंट मैटर, ही विल सेल दैट प्राइस एट 50 रुपी पर केजी। तो हेयर ही इज बाउंडेड, वो बाउंडेड हो गया है उस 50 रुपी पर केजी पे। अगर प्राइस 60 रुपी जा रही है तो उसे लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन वो अपना आराम से फोकस करके राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस 40 रुपी पर केजी हो रहा है तो उसे 10 रुपए प्रॉफिट भी हो रहा है और उसे उस राइस प्रोडक्शन के टाइम पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंडर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उसने कमोडिटी रिस्क को अपना डिक्रीज करके मैनेज कर लिया था। तो हाउ दिस डेरिवेटिव मैनेज दिस काइंड ऑफ रिस्क यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। ओके, सो कमोडिटी रिस्क मैंने आपको बता दिया है, और आप आरबीआई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मैं एक टास्क दे रही हूँ कि आप स्टॉक मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, इन तीनों रिस्क के बारे में आप खुद से पढ़ेंगे। दिस इज द सेल्फ स्टडी, यू विल फाइंड आउट दीज थ्री रिस्क। ओके, so this is the first part of the financial term, and thank you for watching this. In the next part, we are going to discuss some more previous asked question and financial terms, and that topic we will understand also. Okay, thank you. And subscribe our channel and like the video if you like it, and share with your friends. Okay, thank you so much.